Assalamu alaikum dear students, I am Anjum Shafiq, your biology teacher for grade 11, and today I am going to discuss the major groups of Protista, and among them we are going to start the Protozoa. So let's move to the classboard. So dear students, now we are going to start the major groups of Protista. So dear students, how many major groups are there? So there are 4 major groups. As I have discussed previously, there are 4 major groups of Protista. Number 1, protozoans. It is also known as protozoa, and these are animal-like protists. Clear? Number 2 are the algae, which are plant-like protists. Number 3 are the slime molds, and number 4, water molds. Clear? So starting from the first one, ये short question के लिए ज़रूर इसको mark कर लीजिए, the major groups of kingdom Protista. So starting from the first one, that is protozoa. Number 1 is protozoa. So first of all, their general characteristics, the protozoans. So all protozoans are unicellular. All protozoans are unicellular. Clear? All of them, they are unicellular. Number 2, they ingest. चूंकि ये एनिमल लाइक प्रोटिस्ट है, एनिमल्स के अंदर मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या होता है? इंजेस्शन होता है. सो इनके अंदर भी इंजेस्शन ही है. सो दे इंजेस्ट फूड बाय एंडोसाइटोसिस. और एंडोसाइटोसिस डियर स्टूडेंट्स पढ़ा था हमने, a type of movement in which the molecules move inside the cell. Endo means inside. So अंदर move करते हैं in a membrane bounded organelle which is called as food vacuole. और इसमें आगे फर्दर 2 टाइप्स पढ़ी थी हमने, phagocytosis and pinocytosis. ठीक है? Phagocytosis, it is the engulfment of solid, or the movement endocytosis of the solid particles, while pinocytosis, that is the movement of liquid molecules. Okay? And here are some major groups of protozoa now. Major groups of protozoa.
here will be the common name, then the life form, then locomotion, how do they locomote, and example. तो डियर स्टूडेंट्स, ये टेबल गिवन है, इसको प्लीज़ मार्क कर लीजिए एमसीक्यूज़ के लिए, ख़ास तौर पर ये इम्पोर्टेंट है एमसीक्यूज़ पॉइंट ऑफ व्यू से. Now starting from the first major group of protozoa, the first one is amoebae. Here. And the second one is the zooflagellates. Then actinopods. Then foraminiferans. Then are the apicomplexans. And ciliates. So these are the 6 major groups of or major classes of protozoa. So first of all, their life forms. So amoeba, they are unicellular. And they do not have any definite shape and no definite shape in case of amoeba, while zooflagellates, they are also unicellular and some are colonial. Clear? While actinopods, they are all unicellular. Foraminiferans, they are also unicellular. Apicomplexans, unicellular. Ciliates, they are also unicellular. Clear? Now, locomotion. How do these organisms use to locomote? Locomotion किसे कहते हैं? एक जगह से दूसरी जगह मूव करना. Clear? So, amoeba ये locomote करते हैं by forming pseudopodia. Zooflagellates, नाम से जाहिर है, flagellates, flagella. Clear? Actinopods, they also move
by forming pseudopods foraminifers, they also form pseudopods. अभी ये pseudopods क्या होते हैं, pseudopodia क्या होते हैं, इससे इमीडिएटली इसके बाद हम इसको डिस्कस करेंगे. Apicomplexans, they do not have any organ. ठीक है, इनके अंदर कोई ऐसा ऑर्गन नहीं है जो कि इनको लोकोमोशन के लिए स्पेशलाइज्ड हो. Ciliates, they possess cilia. क्लियर. तो यहां पर हम लोकोमोशन के ऑर्गन्स की डिस्कशन कर रहे हैं कि किस ऑर्गन के जरिए ये लोकोमोट कर सकते हैं. अब आते हैं इनके एग्जांपल्स की तरफ. ये वाला पोर्शन एमसीक्यूज के लिए बहुत अहम है. सो अमीबा, इट इंक्लूड्स ant amoeba, and amoeba, and giant amoeba. Zooflagellates, it includes trypanosoma, euglena, and actinopods, it includes radiolarians, foraminiferans, it includes forams, apicomplexans, its example is plasmodium, and ciliates, paramecium, stentor, and verticella. जो सिलियर्स की एग्जाम्पल्स हैं ये एमसीक्यूज के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, इसको ज़रूर ध्यान में रखिएगा. क्लियर. तो ये मेजर ग्रुप्स हैं जिनको हमने टर्न बाय टर्न डिस्कस करना है. सो स्टार्टिंग फ्रॉम द फर्स्ट वन, दैट इज अमीबाए. द फर्स्ट वन इज number 1, amoebae. So it includes the amoeba, amoebae move by forming pseudopodia. Pseudopodia, pseudo का मतलब होता है false. Pseudo means false, and podia means feet. They have false feet. False feet in the sense कि जब ये लोग इन्होंने मूव करना होता है तो तब ये अपने साइटोप्लाज्मिक प्रोजेक्शंस को बाहर निकालते हैं, और फिर जब वो मूवमेंट खत्म हो जाती है तो इनकी साइटोप्लाज्मिक प्रोजेक्शंस अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे वापस आ जाती हैं, तो कुछ भी नज़र नहीं आ रहा होता एज सच. ठीक है. सो सूडोपोडिया which are the extensions of the cell membrane. So इसके ज़रिए ये मूव करते हैं. They live in fresh water. अब वो फ्रेश वाटर पॉन्ड्स में भी हो सकता है, ठीक है, या फिर वो रिवर्स के अंदर भी हो सकता है, और रिवर्स, कैनाल्स, क्योंकि आमतौर पर यही फ्रेश वाटर बॉडीज हैं. ठीक है. और ये मैरीन वाटर में भी रहते हैं, ऑल्सो इन द मैरीन, और like sea, clear, and oceans,
Clear? So that is the way where they live. तो ये इनका हैबिटेट, ऊपर इनके लोकोमोशन. अब यहाँ पर एक एग्जाम्पल है और हमने पहले बात कर चुके हैं. दे हैव नो डेफिनेट शेप, but as they are eukaryotic, they have a proper single nucleus. Clear? Example. Example include ant amoeba, histolytica, scientific name है, which causes amoebic dysentery. Amoebic dysentery, as it is intestinal parasite in humans. इंसानों के अंदर ये इंटेस्टाइन का पैरासाइट है और इसकी वजह से क्या होता है, अमीबिक डायजेंट्री. इसी को जो है बेसिकली डायजेंट्री में एक्चुअली होता क्या है, इन डायजेंट्री there are loose motions with blood and mucus. ठीक है, तो ब्लड भी आ सकता है उसमें, म्यूकस भी आ सकता है. तो ऐसे लूज मोशंस को हम डायजेंट्री कहते हैं. बेसिकली ये इन्फेक्शन है. आमतौर पर ये बैक्टीरिया की वजह से भी हो सकता है और ये अमीबा की वजह से भी हो सकता है. और जब अमीबा की वजह से होगा तो उसे अमीबिक डायजेंट्री कहेंगे. क्लियर? और यहाँ पर एक येलो बॉक्स के अंदर भी एक एग्जाम्पल कोट की गई है, दैट इज ऑफ जायंट अमीबा. जायंट amoeba. Its scientific name is Pelomyxa pelostris. As it is scientific name, we have to underline. So Pelomyxa pelostris इसका scientific name है. ठीक है. It is giant amoeba. Giant का मतलब बड़ा. और it lives in the freshwater ponds. It lives in freshwater ponds, have many membrane bonded न्यूक्लियाई, यानी कि मल्टी न्यूक्लिएटर, बहुत सारे न्यूक्लियस इसके अंदर मौजूद होते हैं. इट मीन्स इट इज मल्टी न्यूक्लिएटेड. आपको याद है कि चैप्टर नंबर 4 का लास्ट टॉपिक न्यूक्लियस, उसमें हमने जब क्लासिफिकेशन की थी मोनोन्यूक्लिएटेड एंड बायोन्यूक्लिएटेड एंड पॉलीन्यूक्लिएटेड, उसमें इसकी एग्जांपल मैंने दी थी जायंट अमीबा की. अभी भी जाकर उसको चेक कीजिएगा. सो इट इज़ मल्टी न्यूक्लिएटेड एंड it has a metogenic bacteria. Metogenic bacteria, तकरीबन 2 इसकी स्पीशीज इसके अंदर मौजूद होती हैं, which lives as a symbiont. Symbiont का मतलब एक दूसरे को फायदा पहुंचा रहे होते हैं. By providing methane to giant amoeba. और इस giant amoeba को
जो है प्रोकैरियोट्स यानी कि इनको एंसेस्टर्स, वन ऑफ द वे ऑफ लाइफ ऑन द अर्थ भी कहा जाता है। और इसको जायंट इसलिए कहते हैं बिकॉज इट इज अप्रॉक्सीमेटली 4 इंचेस इन लेंथ। 4 इंच का मतलब होता है 10 सेंटीमीटर, क्योंकि 1 इंच 2.5 सेंटीमीटर का होता है। तो ये वाहिद ऐसा यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है जो कि इतना बड़ा है, ठीक है। सो इसी वजह से इसको जायंट अमीबा कहते हैं। और इट इज विजिबल विद द नेकेड आई। नाउ द नेक्स्ट मेजर ग्रुप इज the zooflagellates. Number 2, the zooflagellates. तो जैसे यहाँ पर हमने डिस्कस किया पहले लोकोमोशन, इनकी भी लोकोमोशन डिस्कस करेंगे। तो ये किससे मूव करते हैं डियर स्टूडेंट्स? देयर लोकोमोशन इज लोकोमोट बाय यूजिंग one to many flagella, clear, which is located at the anterior end, जो इनका जो anterior end है वहां पर मौजूद है। Its lashing movements pulls the animal in forward direction. लैशिंग का मतलब जैसे कोड़े मारे जाते हैं, जब इसको ऐसे ऐसे अगले एंड पे मौजूद है, ये ऐसे से वो जब वो मूव करेगा फ्लैजिला, तो ये आगे की तरफ वो पुल करेगा उसको जो पीछे इसका ऑर्गेनिज्म है, एनिमल जो मौजूद है, उसको पीछे की तरफ ऐसे पुल करेगा। इसी तरह से ऐसे ऐसे आगे की तरफ लैशिंग मूवमेंट चलती रहेगी और ये फॉरवर्ड मूव करता चला जाएगा। क्लियर? सो दिस इज हाउ दे मूव। और नंबर 2, दे आर स्फेरिकल। जहाँ तक शेप की बात करें, इफ यू टॉक अबाउट द शेप, so here locomotion, shape, movement or locomotion, clear? Or habitat. Now the shape, they may be spherical भी होते हैं, elongated, ऐसे elongated body भी हो सकती है, clear? Having one nucleus, having only one nucleus, एक न्यूक्लियस है। एक न्यूक्लियस का मतलब क्या है? they are mononucleated। तो इसकी एग्जांपल भी याद रख लीजिए, मोनोन्यूक्लिएटेड में ज़ूफ्लैजिलेट्स। और जो न्यूक्लियस है, वन न्यूक्लियस present in the center of cell, बिल्कुल सेंटर में मौजूद है। क्लियर? अब इसकी हैबिटेट की अगर बात करें, if we talk about the habitat, so they live in water. Habitat is fresh water, clear? And also they live on land, clear? ये वहाँ पर भी रहते हैं। और इसके अलावा fresh water, land and the damp places वहाँ पर भी मौजूद हैं, clear? So that is their general habitat. If we talk about their food, इनकी खुराक की बात करें,
food is in the form of living or food is in the form of लिविंग होस्ट जैसे कि पैरासिटिक है, या फिर और दे मे यूज द डेड एनिमल्स एंड प्लांट्स एंड डीकम्पोज देम, उनको ये डीकम्पोज करेंगे, क्लियर, एंड absorb the nutrients. Clear? ये इनके 4 पॉइंट हो गए. Now the life forms. So life forms. So they live in 3 forms. Either they are mutualistic and mean they are symbiotic. They may be parasitic and colonial. Clear? So dear students, the life forms इसको थोड़ा एक्सटेंडेड वे में पढ़ते हैं. ऑफ जू फ्लैजिलेट्स. जू का मतलब ही होता है एनिमल्स, ठीक है, तो उसी तरह से जू फॉर एनिमल्स एंड फ्लैजिलेट्स मीन्स के देयर मोड ऑफ लोकोमोशन इज फ्लैजिला. तो एक सिंगल फ्लैजिलम से लेकर हंड्रेड्स ऑफ फ्लैजिला हो सकते हैं इनके पास. तो हमने बात की कि 3 तरह की इनके लाइफ फॉर्म्स हैं. इनमें म्यूचुअलिस्टिक भी हैं, इनमें पैरासिटिक भी हैं और इनके अंदर कोलोनियल भी मौजूद है. तीनों कैटेगरीज हैं. सो फर्स्ट ऑफ ऑल द सिम्बायोटिक, तो जो सिम्बायोटिक फ्लैजिलेट्स हैं इनमें the example is of trichonympha. Trichonymphas are specialized and complex flagellates having hundreds of flagella. Having hundreds, इस फिगर को याद रख लें, एमसीक्यूज के लिए मार्क कर रहे हैं. थाउजेंड्स, हंड्रेड्स और 10,000s और 1 और 10s, तो ऑप्शन इज हंड्रेड्स. They having hundreds of flagella and live as a mutualistic organism in the gut of termites. Dear students, क्लास 10th में, ग्रेड 10th के अंदर आपने एक टॉपिक पढ़ा था इंटरैक्शंस. प्रोबेबली चैप्टर जो था आपका जिसमें आपने एनवायरनमेंट वाले चैप्टर था, तो उसके अंदर आपने एक टॉपिक पढ़ा था दैट वाज इंटरैक्शंस. ठीक है, एनवायरनमेंट के अंदर इंटरैक्शंस पढ़े थे आपने. इंटरैक्शंस में आपने 2 तरह के इंटरैक्शंस का जिक्र हुआ था. एक होते हैं इंटर स्पेसिफिक और एक होते हैं इंट्रा स्पेसिफिक. ठीक है, और फिर आगे से इनकी क्लासिफिकेशन पढ़ी थी. इसमें जो इनके इंटरैक्शंस हैं उसमें एक था म्यूचुअल, वन वाज था
प्रिडेशन, द नेक्स्ट वन वाज द कंपटीशन, और तीसरा था सिम्बायोसिस। सिम्बायोसिस के अंदर आपने आगे 3 कैटेगरीज का जो है वो पढ़ा था, म्यूचुअलिज्म, पैरासाइटिज्म एंड कॉमेंसलिज्म। तो जहाँ पर आपने म्यूचुअलिज्म पढ़ा था, म्यूचुअलिज्म के अंदर ये एग्जाम्पल थी वहाँ पर बुक में, अगर इफ़ यू हैव द बुक्स आप आज जाकर उस पेज को दोबारा खोलें और उसमें देखिएगा कि उसमें एग्जाम्पल दी गई कि एक प्रोटोजोन है जो कि गट की टर्माइट्स, यानी जो टर्माइट्स जो है उनकी गट में रहता है, और इसके पास एक्चुअली है एंजाइम दैट इज सेलुलेज। अब जो टर्माइट्स हैं यानी दीमक, वो लकड़ खाती है, लेकिन लकड़ को हजम करने के लिए, लकड़ क्या है, वुड, और वुड के अंदर सेलुलोज, तो सेलुलोज को डाइजेस्ट करने के लिए कौन सा एंजाइम चाहिए, सेलुलेज। चैप्टर नंबर 2 में हमने पढ़ा था पॉलीसेकेराइड्स सेलुलोज के अंदर। तो ये इसके पास है, किसके पास, ट्राइकोनिम्फा के पास, जबकि टर्माइट के पास नहीं है। तो ये उसकी गट के अंदर रहता है, मतलब उसकी इंटेस्टाइन के अंदर रहता है, उसका डाइजेस्टिव सिस्टम में रहता है। जब वो लकड़ खाती है, लकड़ यानी कि वुड वो पहुंचती है गट के अंदर, इसको एंजाइम प्रोवाइड करता है, और फिर वहाँ से उसकी जब हाइड्रोलिसिस होती है तो उससे इन दोनों को फायदा मिलता है। तो इस ज़ूफ्लैजिलेट को, मतलब कि ट्राइकोनिम्फा को, वहाँ से खुराक भी मिल रही है और रिहाइश भी मिल रही है, जबकि टर्माइट को यानी उस दीमक को वहाँ से खुराक मिल रही है। ठीक है, सो इसमें रिलेशनशिप किस तरह से हुआ कि ट्राइकोनिम्फा have cellulase which is required to digest wood, क्लियर, और जो कि लैक करता है टर्माइट। तो ये इस तरह से ये सिम्बायोटिक एग्जांपल आ गई। उसके बाद अब हम डिस्कस करते हैं पैरासिटिक फॉर्म की। इनमें पैरासाइट्स भी हैं। तो पैरासिटिक ज़ूफ्लैजिलेट में डियर स्टूडेंट एक बहुत एक डिफरेंट किस्म की और डेंजरस किस्म की डिजीज है, उसका जिक्र है। एक ज़ूफ्लैजिलेट है जिसका नाम है ट्राइपैनोसोमा। सो ट्राइपैनोसोमा is a parasitic zooflagellate ये बेसिकली रहता है which lives in a fly, एक मक्खी है उसके अंदर रहता है ये, ठीक है, जैसे मच्छर से मलेरिया होता है, ठीक है। ये जो मक्खी है, जिस तरह मच्छर खून चूसता है, मतलब कि वो फ्लूइड फीडर है, इसी तरह से ये जो मक्खी है, ये फ्लाई, ये भी फ्लूइड फीडर है। इसका नाम है इन अ फ्लाई कॉल्ड टीसी फ्लाई और टेट्सी फ्लाई, मुख्तलिफ तरह की प्रोनाउंसिएशन है इसकी, ठीक है। टेट्सी फ्लाई और टीसी फ्लाई इसको कहा जाता है, या फिर सेट सी फ्लाई कहा जाता है इसको, सेट सी फ्लाई। ये डिफरेंट प्रोनाउंसिएशन हैं, आपको जो अच्छी लगे आप प्रोनाउंस कर लीजिएगा। सो इट्स अ फ्लाई एंड इज अ फ्लूइड फीडर, फ्लूइड फीडर चैप्टर नंबर 12 उसमें पढ़ेंगे मेथड्स ऑफ एनिमल न्यूट्रिशन में, कि ऐसे एनिमल्स जो खून चूस के जो है उससे अपनी खुराक हासिल करते हैं उनको फ्लूइड फीडर्स कहा जाता है, या फिर कोई लिक्विड चूस के सक करके और उससे अपनी खुराक हासिल करे तो उनको भी फ्लूइड फीडर्स कहा जाता है। जैसे मॉस्किटोज, जैसे लाइक द चैप्टर नंबर 14 में पढ़ेंगे एफिड्स, तो उसी तरह से ये फ्लाई भी फ्लूइड फीडर है, टेट्सी। सो ये जब ब्लड सक करती है ह्यूमंस में से, ठीक है, इसके अंदर मौजूद है, इट लिव्स इन अ फ्लाई, इसके अंदर मौजूद है ये ज़ूफ्लैजिलेट जिसका नाम है ट्राइपैनोसोमा, क्लियर। और ये जब
ब्लड के जरिए जाएगा बॉडी के अंदर, सो इट causes a disease by the name of African sleeping sickness. African sleeping sickness. तो इन्फेक्शन है, अच्छा खासा डेंजरस इन्फेक्शन है ये। ये आपने याद रखना है। तो ये पैरासिटिक की एग्जांपल होगी। और तीसरी लाइफ फॉर्म जो है दैट इज कॉलोनियल। तो जो कॉलोनियल है दे आर सेसाइल। सेसाइल का मतलब होता है फिक्स्ड, मतलब कि नॉन मोटाइल, जो एक जगह पे बैठे रहें, चिपके रहें, वहां से हरकत ना करें, जैसे कि प्लांट्स, ठीक है। तो उनके लिए टर्म होती है सेसाइल, फिक्स्ड होते हैं जो कि दे आर फिक्स्ड मीन दे आर सेसाइल। मैरीन मतलब कि समुद्रों में रहने वाले, नमक वाले पानी में रहने वाले, और फ्रेश वाटर या फिर फ्रेश वाटर में जैसे दरियाओं का पानी, लाइक जैसे पॉन्ड्स का पानी, ठीक है, जैसे कैनाल्स का पानी, फ्रेश वाटर, एंड लिव इन a colony. They are attached to a single stalk. एक सिंगल स्टॉक होता है, उसके साथ ये अटैच होती हैं तो यूनिसेलुलर लेकिन कॉलोनियल। आपको बताया था कि इनके अंदर जो कॉलोनियल ऑर्गेनिजम्स होते यूनिसेलुलर हैं, लेकिन इनके अंदर डिवीजन ऑफ लेबर नहीं होता, हर कोई अपना अपना काम करता है, किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होता, ठीक है। डिवीजन ऑफ लेबर इज नॉट देयर। सो अटैच्ड टू अ सिंगल स्टॉक, हैव अ सिंगल फ्लैजिला, हैविंग अ सिंगल flagellum which is surrounded by, इसके इर्द गिर्द मौजूद है a delicate collar, and it resembles the sponges. एनिमल किंगडम के अंदर हम पढ़ेंगे स्पॉन्जेस में, ठीक है। तो स्पॉन्जेस होते हैं वो उनके सेल्स इससे रिजेंबल कर रहे होते हैं। इसकी एग्जांपल में कोएनोफ्लैजिलेट्स आर द एग्जांपल। इस तरह से डियर स्टूडेंट्स इस तरह से इनकी कॉलोनी होती है। और ये सारे एक ही स्टॉक के साथ अटैच होते हैं, जो कि आगे किसी रॉक के साथ अटैच होता है। ये स्टॉक है इसका, ठीक है, दिस इज स्टॉक। और ये सारे यूनिसेलुलर ज़ूफ्लैजिलेट्स और हैविंग सिंगल फ्लैजिलम, ये एक सिंगल फ्लैजिलम है इनके पास। और यहाँ पर इनके इर्द गिर्द जो है ये वाला, ये कॉलर सेल कहलाता है। कॉलर सेल जो इनको सराउंड करते हैं, इनकी शेप बिल्कुल तकरीबन इन सेल्स की जो शेप है वो मिलती है स्पॉन्जेस के अंदर जो सेल्स होते हैं कोएनोसाइट्स, उनसे मिलती है। इसी वजह से इनका नाम कोएनोफ्लैजिलेट्स रखा गया। सो डियर स्टूडेंट्स, होपफुली आज का लेक्चर आपको क्लैरिफाई हो गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में और डिस्कस करेंगे सिलिएट्स को। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।